Hello everyone and once again to the YouTube channel of Get Set Law by MS. Guys, my name is Siddhant Singh and we are very excited to bring a series, a 5-minute show for all the students preparing for law entrances in the year 2026. Whether it is CLAT, ALET, MHCT, LNAT UK, May June duration ka, NMIMS SLAT. So we are touching those important crucial topics which is very much important for you to crack these entrance exams. So to start with the first session for legal reasoning, introduction to legal reasoning, but it is not limited to legal reasoning. We are coming up with all the other subjects like quant, English, GChem, everywhere we'll be there. So guys, please don't forget to check our playlist. But this is the first video. Let's begin. So in this video, I started with this part कि अगर introduction to legal reasoning है, what is legal reasoning? So I need to first check कि legal reasoning as a subject क्या होता है. So it's a process of अप्लाइंग लीगल प्रिंसिपल, मतलब लीगल लॉ प्रिंसिपल जो आप लोग क्लासेस में पढ़ोगे, आप लोगों ने कहीं आर्टिकल वगैरह में पढ़ाए. दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स विच यू विल बी अप्लाइंग एनी प्रेसिडेंट विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, या फिर कुछ लॉजिक्स भी अप्लाई करने रहते हैं. बट व्हाई? टू एनालाइज अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड अराइव एट अ कंक्लूजन. सो गाइस, that is what is there. It is not similar to one which you have been studying in 11th 12th class में मैंने definition पढ़ ली जाके लिखना है. No, it's an application based paper. So please understand, it is not like कि real life situations में law apply हो रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. Limit होता है. जो हमें legal principle दिया था, we need to apply in those facts and the situation which is given in the question. Now let's understand what are the different types of structuring of the question which takes place across all the entrance exam. So first I have taken a passage and facts which is majorly there in common law admission test. कभी कभार ALET में it's there. Since last 2 years it has not been there, but maybe somewhere it is there. Next we have principal facts in ALET, Maharashtra CT, SLAT, NMIMS SLAT. These are the questions. 1-liner principle, 2-liner principle, fact of 3-4 line being given and 4-5 options of 4 options में क्वेश्चंस भी दिया होता है. पैसेज में भी देयर इज अ 400-350 वर्ड पैसेज एंड फैक्ट्स बीइंग गिवन ऑफ 90-80 वर्ड्स एंड देन 4 ऑप्शंस ABCD दिया होता है. देन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग देयर इन स्लैट एंड द पेपर्स, बट मे बी ALET में भी आता है. सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. एंड अ लीगल GK बेस्ड क्वेश्चंस, कभी कभार जनरल नॉलेज ऑन द कॉन्टेक्स्ट विद लॉ, मेजरली महाराष्ट्र सिटी में इट इज देयर, और मे बी अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3-year LLB, सो 3-year LLB में ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी is being asked. So that is what is the structure. Let's move towards the approach to solve questions. So now I have understood what are the different types of questions. अब मेरा approach क्या होगा, इनको solve कैसे करना है. First I need to read it properly, carefully, what all facts have been there. Next I need to stick to the principle. At times in CLAT थोड़ा सा application of prior knowledge is required as compared to previous 2 papers, CLAT 24-25 में, but majorly we need to stick to the principle and all the other entrances also. Then I need to do the elimination methods, जहाँ पे मुझे options को भी eliminate करना होता है. Like why A is not correct, B is not correct, C is not correct, so I'm left with only D. तो कभी कभार correct ना ढूंढते I need to eliminate the wrong options. That has to be the approach. And the next is practice regularly. Consistency is the key. If you don't do it, then you're going to fail it. So इसलिए मुझे ये चीज करना बहुत important होता है. And the last part is, sir, what are the major tips, the quality helpful tips to crack this particular exam? Is first I need to avoid the emotional reasoning. This is an important fact which a lot of students miss out because वो out of emotion, murder, rape, थेफ्ट, रॉबरी के क्वेश्चंस क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आते हैं, हम अपने ऊपर लेते हैं. डोंट टेक इट दैट वे, यू हैव टू अप्लाई योर ओन लॉजिक. इसलिए मैं कहता हूं लॉयर्स एंड लेमैन्स आर डिफरेंट. ठीक है, एप्लीकेशन डिफरेंट होता है. मैनेज टाइम, अ लॉट ऑफ रीडिंग हैज टू बी डन. लीगल रीजनिंग में मुझे नॉलेज एनरिच करना पड़ता है. सो इज द रीजन आई नीड टू मैनेज टाइम व्हाइल आई एम रीडिंग एनी डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव टू स्टे अपडेटेड. यस, there are multiple websites, multiple articles which we need to read, magazines which already Get Set Law provide to our students, and a list of all the videos being there on YouTube channel also. So I need to stay updated about the ongoing legal affairs, not the current affairs. I'm talking about the legal affairs. Who is the present CJI, क्या judgment हुआ, final judgment क्या रहा, Supreme Court ने क्या बताया, that is all. And the last one is to revise the principles. Stick to the roots, stick to the basics. मुझे conceptual clarity has to be there. अगर आप ये सब कुछ कर लोगे guys, so definitely आप legal reasoning subject को ace कर लोगे. और ये series का पहला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, please comment section में जरूर बताना. We are there on the social media platform. These are the QR codes. Please don't forget to like, share, subscribe to our channel. And bye bye guys. सिद्धांत सर signing off. जल्दी वापस मुलाकात होगी इसी series में. Thank you so much.